you can say here okay, so it is just like the Linux operating system, it is used in your Android mobile phone. Okay, तो आमे जो Linux operating system use करूचे, so it is backend by the Java programming language, so that आमे जो Linux टा में use करूचे, तो सेति पे हमको कौनसी antivirus टा दरकार पड़ेने, because Linux operating system is security, it is so inbuilt, माने ता भितरे inbuilt security एते feature अच्छी, जोड़ा किसी automatic कौन कोई ना virus टा को protection करे. तो बिफोर दैट हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आसला एटा 1969 रे डेवलप होइतला बाय AT&T लैबोरेटरी जे कि हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेल लैबोरेटरी जे हम बनै छि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए माने ए ऑपरेटिंग सिस्टम टाको बनैतिले तापर ऑपरेटिंग सिस्टम बनेला परे हमर जो डिफरेंट एप्लीकेशन अछि से एप्लीकेशन सहित काम करबा को हेले से माने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाको डेवलप करथिले तो AT&T बेल लैबोरेटरी रे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइतला आकु भी बनाइतले से डेनिस रिचे एंड थॉमसन ए सब ए माने समस्त मिसी के बनाइतले तो आ भितर तीनटा लेवल अछि गोटे होची तुमरा कर्नेल व्हिच शेड्यूल द टैग्स एंड मैनेजेस द स्टोरेज सबो ऑपरेटिंग सिस्टम रो गोटे पार्ट थाय दैट इज कॉल्ड एज द कर्नेल कर्नेल रो वर्क होची मु जेते बेले कंप्यूटर सिस्टम को किसी कमांड दोची दैट यू हैव टू ओपन माय फाइल एंड यू हैव टू सेव माय फाइल कर्नेल इज मैनेजिंग दैट थिंग जेमति कि हमें ट्रैफिक रे गला बेले the traffic police is guiding us when to move when to stop the similar way kernel work in the operating system is like that it is just guard us when you have to move or when we have to stop okay बुझियला Yes, sir. The kernel which schedule the tags and manages the storage, the shell which connected the interpret user command call program from the memory and execute them. तार आधे kernel ले कौन था किसी किसी छोटा छोटा command था जिनके कि हमें suppose मु इटे देखे दोची हमें window रे भी shell command किसी use करूचे सपोज मते डी ड्राइव को जीवार अछि तो मु माय कंप्यूटर ओपन करके डी ड्राइव टा को मु ओपन करूची तो मु एटे डायरेक्टली डी ड्राइव को न जाय कि एटे मु लिखि परिबी डी डी कोलोन डी कोलोन एंटर तो ऑटोमेटिक मु डी ड्राइव को पळेले दर मु कोनोसी फोल्डर को जीवा को चाहूची सपोज सीएमडी डीआईआर तो सीडी suppose if I write here Java so I'll check one file मोर folder नाटा देखियो जे suppose मु जीवा को चाहूची डेटा अंडर को जीवा को चाहूची तो cd डेटा ओके तो मु ऑटोमेटिक डेटा अंडर को पड़ले सो योर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट वर्किंग इन दैट वे माने हमर ऑटोमेटिकली कमांड थ्रू रे से कोन करिवो ना कोनोसी फोल्डर को जीवो कोनोसी ड्राइव को जीवो एबे मु फोल्डर रो बाहर को आसीबा कहले cd डॉट डॉट यूज करले एबे मु फोल्डर बाहर को आसी गले एबे सपोज मते ई ड्राइव को जीवार अछि ई कोलन एंटर मारले तो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जेते बळे आस्तला इट इज नॉट हैविंग एनी ग्राफिक यूजर इंटरफेस एबे हमें जो एप्लीकेशन टा यूज करूचे इट कंटेन ए ग्राफिक यूजर इंटरफेस we see the existence of the files and folder but in the Unix operating system we cannot see where our files are stored it is not having any kind of graphic format only we are interacting with that file through the commands हमें command through रे ता सहित interaction करूतले बुझ पाइलो Yes, sir. then
in between, what is the work of kernel? The kernel is called as the heart of the operating system. Okay, it control the hardware and turn the part of the system and off the programmer command. If you ask the computer to list all the file or directory, the kernel tells the computer to read the file. So what are the instruction you are given to the computer? So it is the instruction is processed by the kernel. Okay, it's just like what we have the brain. If I'm giving any instruction to you or asking you anything, that you have to receive and your brain is functioning how to respond. So similar way, kernel, you can say it is just like a brain. We can say that CPU is a brain. Yes, CPU is a brain, but that is a hardware. Okay, but for what processing our instruction, okay, so we required what that kind of instruction. That instruction can be understand by the kernel. ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ବ୍ରେନଟା ଆମର ହେଡ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାର୍ଡୱେयर। ବଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କହୁଛି, ଯୋଉ ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଜ୍ ହାପେନ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ योर ବ୍ରେନ୍ what sensitive organ is there। ତ ସେମାନେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ମତେ रिप्लाई କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। so that is a work of your brain, that is what it is present। the similar way, in a computer your kernel is also like in that way। okay, Yes, sir. then in that kernel we're using another part, one is shell command। okay, the shell command, there are several type of shell is used, most notable command। the shell command is what, if you want to pass any kind of instruction, ମୁଁ ଯଦି D drive को ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ D colon enter ମାରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ E drive को ଯିବାର ହେଉଛି ମୁଁ E colon enter, କୌଣସି ଫୋଲ୍ଡର को ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ CD ଲେଖିକି ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡର को ମୁଭ୍ କରୁଛି। ତ that is called as your what a shell command। okay, so first you give some heading Unix। right, this operating system this I am audible? Yes, sir. ଟିକେ hang ହଉଛି କଣ zoom ଟା। this operating system is developed in the 1969 by Bell Laboratory। hello, Yes, sir. okay, it is widely used in both, next point, it is widely used in both server and workstation। ଦେଖିଲ? Yes, sir. it provides, next, it provides an environment so powerful and flexible which is used
in the business, science, and academic. দেখিল? Yes, sir. Then gives another heading. How Unix is organized. How Unix is organized. The Unix has three levels. The Unix has three levels. First point, it contains kernels. It contains kernels which schedules the tags and manages the storage. Next point, the shell command next point, right? The shell which connect and interprets user command, comma, call program from memory, calls program from memory and execute them. Next, you write the tools and application. Next point, the tool and application. The tools and application that offer additional functionality to the operating system. Sir, additional? Additional functionality to the operating system.
Then first Gibson heading, kernel. What is kernel? It is the heart of the operating system. It is the heart of the operating system. It is the heart of operating system which controls hardware, memory management, task scheduling, and file management. Next Gibson heading, shell command. कर्नल लिखी देला पूरा. Yes, sir. Next write shell command. It is the utility that process your request. It is the utility that process the request next. When the user type a command at terminal, the shell interprets the command and calls the program that you want. Next point, the shell uses the standard syntax. Syntax means for writing the program, what are the dictionary rule you have to follow, that is called the syntax. The shell uses the standard syntax for all commands. Next point, the Bourne shell, B-O-U-R-N-E, B-O-U-R-N-E, Bourne shell and corn shell, B-O-U-R-N-E, Bourne shell, next, and
corn cell, KORN, corn cell are the most famous cell, which are available with the most of Unix variant. Next Gibson heading, last parts of Unix system, tools and application. Tools and application. So there are hundreds of right. Cell ta lekhidela to pura. Yes, sir. So there are hundreds of tools available to Unix user. Although some have been written by third-party vendors. Sir, outright no କହିବେ. Some have been written by third-party vendors for specific application. Next point, the typically tools are grouped into categories. Tools are grouped into category for certain functions such as word processing, business application, or programmings. Okay, it is all about your Unix operating system. सब पॉइंट बुझीला यूनिक्स रो टिके चेक कर दियो यदि किसी डाउट अछि मते पचार तो नेक्स्ट हमें यदि नथिबा हमें नेक्स्ट मूव करबा
सर ए शेल टा टिके ना को आउथरे कह दियंतु सेल टा होची गोटे कमांड जेमति कि सपोज आमे यूज करिवा ए जो कमांड गुडा मु धर cd लिखुची ताले से मते गोटे ड्राइव को नउची धर मु लिखिली md दिशा अच्छा एबे मु देखिबी ई ड्राइव को मु जाउची एबे एबे दिशा सर्च करबी देखो एबे संगे संगे क्रिएट हला बुझी होची 1 नवंबर 9:37 मिनिट एबे क्रिएट हला माने एटा होची कोन हमें कमांड थ्रू रे सब डायरेक्टरी टा क्रिएट करूचे बुझी होची यस सर मु जदी लिखिबी तो मु लिखिबी dir ताले मोर डी ड्राइव रे जेते सब डायरेक्टरी अछि सब देखेगा ई ड्राइव रे 7 अक्टोबर रे कोन क्रिएट हेछि हला ई सब डायरेक्टरी रे देखेला कोटा डायरेक्टरी कोटा फाइल तार सब एक्सटेंशन सह सब एठी देखेला बुझियो सो दीज आर द कमांड्स वी आर यूजिंग माने बिफोर ए जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस आसिया पूर्वरु आमे एटा यूज करथले मतलब मु टाइम देखिबी तो इट इज शोइंग यू करंट टाइम ओके एटा मते करंट टाइम देखेबो मु जरा टाइम ता चेंज करी फिर न्यू टाइम पास करले मोर देखेबो बुझेला डेट जदी मु Yes, लिखबी एटी मु डेट यूज करले तो आज करंट डेट एटा देखेबा जदी मते चेंज करिवार अछि न्यू डेट मठी पास करिवि तारे जदी मते ए स्क्रीन टा को क्लियर करियार अछि एटी मु cls यूज करले बुझिला yes sir. तो ये जो कमांड हमें यूज करछे एटा होचे डॉस कमांड हमें डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करछे सेमती यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने तार भी स्पेसिफिक कमांड सब रहिছে से कमांड थ्रू रे हमें डायरेक्टरी बनै परिबा फाइल बनै परिबा बुझि होची तो से एई सब कमांड हमें यूज करले हमें सब वर्क करि परिबा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बुझिला सेटा Yes, सब sir. हमें कोआ जीवो सेल कमांड है ना Yes sir. बुझि होची किछि डाउट नहीं तो No sir. तो सेमती आमे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखिबा तो लिनक्स रे भी सेमती हमर कमांड अछि Linux and Unix is just like a same देखियो like that of Unix, Linux operating system we're using. It is also contained in the three part: kernel, system library, system utility. Basically, the Linux operating system that we're using in our Android mobile application. हमें जो Android mobile phone use करूचे, इटा backend by Google, but basically इटा Linux operating system रू inspire है कि है जी. आउ इटा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रे बेसिकली आ ऊपर बना है बुझला Yes sir. so it is the popular linux is the one of the popular version of unix eta unix the version no asche it is an open source means which is freely available and देखियो जते बेले हमें एटा फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स माने कोन होजी फ्रीली अवेलेबल आ जे चाहिबो सी निजे ता कंटेंट को मॉडिफाई करि परिबो
जेमते कि मु सैमसंग रे मु एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेटेस्ट यूज करी तार इंटरफेस टा जहाँ रहिबो vivo ओप्पो रे अलगा रहिबो आ नोकिया रे भी अलगा रहिबो बुझी होची आमे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूचे किंतु तार लुक एंड फील टा हमर अलगा रहउची बेस्ड अपन द कंपनी माने कंपनी माने कोन करिवे निज वे रे से माने निजे चेंज कर देबे इंटरफेस टा को बुझी पाइलो Yes, sir. okay so that it is called as the open source means freely available and you can change it based upon your requirement तुम्हारा requirement माने हिसाब रे तमे आको चेंज करि परिबो बुझिला Yes, sir. एबे हेडिंग दिया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम next slide it is the popular version of operating system it is a popular version of operating system next it is a open source it is a open source and freely available next right the components of linux the components of linux okay so similar way the components of linux system you have the kernel is the core part of the linux and it is responsible for all the major activity of this operating system it consists of the various modules it interact directly with the underlying hardware system and it provides required abstraction to hide the low level hardware details mane abstraction means which is uh, only showing the relevant information जो information टा मते केवल दरकार मु से information टा show करिवि encapsulation means hiding the information which is not required for me okay
the kernel, by using of kernel, it is only showing you the related information which is required and hiding the information which is not required. Okay, next it contains the system library. The system library are the special function or program using which application program or system utility access the kernel feature. Kernel feature टाको मते access करबा कहले मो system library use करिवे. System utility are the program responsible for specially individual level of tags. So it is used for the special level of taxes. Okay, बुझेला तीनटा part. Yes, sir. First heading here, Linux components of Linux operating system. First one like a kernel. Because kernel is the core part of Linux. It is responsible for, next point, it is responsible for all major activity of the operating system. It consists of various modules. It consists of various modules lecture to Yes, sir. and interact directly with the underlying hardware. Next point, it provide the required abstractions it provides the required abstraction to hide the low level hardware details. To system or application program. Next, write system library.
these are special function or program using which application program or system utility application program or system utilities access kernel features. Next point, these library implements most of common functionality of the operating system. This library implement most of the functionality of the operating system and do not requires kernel module code to access the writes. Just a kernel modules code to access the writes. Then write system utility. It is responsible for to do specialized individual level of tax. Okay, so next is what is the basic features of your Linux is what? Now one is portable. Portable means in any operating system it works. Okay, so everywhere it works. Then open source, Linux source code is freely available and it is community based development project. Multiple team work with a collaboration. First is portable. In every devices or every hardware it works. Open source, which is freely available. Multi user, माने आमे गोटे सिस्टम रे ताको इंस्टॉल करिबा मल्टीपल यूजर काम करिबा जेमते कि तुमरो डेस्कटॉप हो मोर लैपटॉप हो दैट इज अ सिंगल यूजर सिस्टम एट ए टाइम गोटे यूजर काम करि परिबो किंतु मल्टी यूजर कोन हबो ना मु गोटे सिस्टम रे बा गोटे सीपीयू रे मु ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करिवि मल्टीपल यूजर तांकर मॉनिटर गुडा कनेक्टेड हबो तो से माने से जगह रे काम करि परिबे सेटाला मल्टी यूजर. Next is multi-programming. Linux is a multi-programming system, means multiple application run at the same time. तो normally हमारा window operating system रे भी एबे multi programming रूपे काम करूची जेमते कि at a time हमें PowerPoint रे काम कर open करि परिबा हमें Windows open करि परचो एटा नाही कि आगुर कोन होतला सिंगल यूजर सिस्टम थिला गोटे एप्लीकेशन हमें ओपन करथले जे पर्यंत हमर काम न सरे कि हमें से एप्लीकेशन टा क्लोज न करूचे आ गोटे एप्लीकेशन हमर ओपन हेई पारु नथिला तेनो सेति पे एटा हमर सिंगल यूजर सिस्टम नथिला एटा मल्टी प्रोग्रामिंग नथिला. हायरार्चिकल एंड फाइल सिस्टम
Linux provide the standard file structure which system file and user file are arranged in particular manner. The shell command you already know in the Unix, that is providing you some kind of command through which you can work it properly. Next is security. In security basis, Linux operating system till now is very high demanded operating system. तुमे केबे देखिछ तुमरा मोबाइल फोन ने केबे एंटीवायरस इंस्टॉल करिछ केबे करूछ एबे Sir, sir, होची कोन मोबाइल फोन एंटीवायरस यूज होची sir, now, sir, ମୁଁ ଜାଣିନି। मोबाइल रे एंटीवायरस यूज होनी तुमे गोटे जेंति हमें कहू कंप्यूटर जेतेबेले किणु आमे कहबा जे गोटे एंटीवायरस पक्का गोटे मैकाफी किण Yes, sir. किबा कास्परस्की किण मोबाइल सेमते हमको करिया पड़छि कागु करिया पड़ुनी जेतेबेले नुवा स्मार्टफोन आस्तेला सेतेबेले मोबाइल प्रोटेक्शन पई गोटे एंटीवायरस आस्तेला किंतु एबे मोबाइल ले कोनोसी एंटीवायरस दरकार नाही कारण आमे जो मोबाइल फोन टा यूज करछे इट इज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम and it is developed by the Linux operating system. Linux operating system is itself a what antivirus माने एटा कंप्लीटली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे बना होची तो जेते भी सब भाइरस सब बना हुए से भाइरस को ही काटे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माने जेते सब एंटीवायरस हमें बनाऊ तो बेसिकली सब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नेकी ही बना जाइता है तो से एते सिक्योरिटीली एते जावा प्रोग्रामिंग स्ट्रांग थाए ताको काटिकी आगु जीवा बहुत मुश्किल थाए तेणु सिक्योरिटी रीजन रे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होची सबुटर हाई अनऑथराइज एप्लिकेशन और डुप्लीकेट एप्लिकेशन को से तुमको परमिशन दब नहीं करिया पई किंतु जदि तमे ता गोटे थर्ड पार्टी एप्लिकेशन परमिशन थाए मोबाइल फोन ने जदि तमे ताको एक्सेस करि दबो ताले ऑटोमेटिक जो गुडा वायरस सॉफ्टवेयर अछि ऑटोमेटिक इंस्टॉल हे जिवो तो सेते पे से बाय डिफॉल्ट डिसेबल थाए आउ सेटा यूजर को ही देई थाए जे तमे करि परिबो कि नै तमे जदि एक्सेस कर दबो ताले ऑटोमेटिक से सिस्टम रे इंस्टॉल हे जिवो से वायरस ता तमे हम सबले थर्ड पार्टी एप्लिकेशन टाको डिसेबल करके रखि दबो बुझि पाइलो Yes, sir. so gives an heading basic feature of Linux operating system basic features of Linux operating system or basic features one you write portable first is your portable it is the it has the ability to work on different type of different types of hardware in same way it has the ability it has the ability that has the ability to install the software it has the ability to install the software on any kind of hardware platform next
Right? Open source. Open source. It is freely available. It is freely available, and it is community-based development project. The next is multi-user. Linux is a multi-user system. Linux is a multi-user system, means multiple user can access the system resources. Means multiple user can access the system resources like memory and application program at same time. देखिए Yes, sir. next, right, multi-programming. It is a multi-programming system. Next point. It is a multi-programming system, means multiple application, means multiple application can run at same time. Okay, then next point, hierarchical file system. HC, HIER, HIER, ARCHICL, hierarchical file system. Hierarchical file system. It provides a standard file structure in which system files are arranged. Next, right, shell, SHELL, shell. It provides a special
interpreter program which can be used to execute command of the operating system. Next point, it can be used to do various type of operation called application program. Next is security. It provides the user security. It provides user security like password protection, controlled access to specific files, encryption of data. लिख लो. Yes, sir. ओके, ठीक अछि. नेक्स्ट क्लास रे मु ता पढेबी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टा पढिबा है ना. Yes, sir. ठीक है, चलो बाय. Thank you, sir.